organizers of this particular program to have invited me to this particular session. Thanks a lot. Yes, good morning. And also I am very grateful to all the students who have come, है ना, 11 बजे संडे मॉर्निंग, शायद आज आप लोगों को कॉलेज छुट्टी मिला. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव स्टार्टेड ऑनलाइन, तो आज शायद आप लोगों को कॉलेज छुट्टी रहेगा. यू कुड हैव डन मेनी अदर थिंग्स बट यू हैव कम टू दिस सेशन. थैंक्स अ लॉट. सो स्टूडेंट्स, see we have learned so many things. बहुत सारे सेशन हो चुके हैं. So we have learned till now many things. Nature, we learned about who is that mastermind behind the nature. We learned about God also. And the most interesting part which we learned was, I think, we are not this body, we are soul. है ना, ये तो शायद अच्छा आप लोगों ने सुना ये कॉन्सेप्ट पहले भी? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. इफ यस, देन यू कैन रिप्लाई मी ऑन चैट. ओके, यस, फाइन. देखो, जब मैं भी इंजीनियरिंग में था, व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस, इट वाज रियली एस्टोनिशिंग फॉर मी. अरे, मुझे तो आज तक लगता था मैं ये हूँ, बट नो, इट्स नॉट रियली मी. आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल. ओके, ये तो आपने पहले भी सुना है. आफ्टर दैट we can understand that what is the innate nature of soul, है ना. उसको थोड़ा अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, what is the innate nature of soul, तो हमें पता चलेगा is to serve, है ना. अभी nature of the soul is to serve. okay, अभी इसका मतलब क्या है? what do you mean by nature? see, nature means anything, any activity which is natural for that particular element or personality. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट का नेचर क्या है? इट हैज टू बी सॉल्टी, इजंट इट? सिमिलरली शुगर का नेचर क्या है? स्वीट. वैसे ही सोल का क्या नेचर है? इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट, वी कम टू नो दैट टू सर्व. ये भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, टू सर्व. कैसे? हाउ दिस इज ट्रू? if we analyze properly, every one of us, everyone practically in this world wants to serve someone, wants to serve. In fact, not only I'm talking about human beings, it's animals also. They also want to serve. क्यों true for animals? Because animals also have soul. तो इसलिए they also want to serve. अभी आप लोग पूछेंगे, नहीं सर, मैं तो किसी को सर्व नहीं करता. I am the master of everyone. मैं किसी को सर्व नहीं करता. No, that's not true. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई गिव यू. मान लो मैं पूरे दुनिया का प्रॉपर्टी आप लोगों को दे देता हूँ. यू हैव प्रॉपर्टी ऑफ होल वर्ल्ड विथ यू, है ना. टॉप क्लास का कार है आपके पास, अच्छे स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स है, पूरा सारा प्रॉपर्टी आपके पास है, बड़े बड़े बंगले हैं. एंड आई विल गिव यू अ कंडीशन दैट देयर इज नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड अदर देन यू. आप अकेले हैं पूरे वर्ल्ड में और पूरा वर्ल्ड का प्रॉपर्टी आपका है. विल यू बी हैप्पी? No. This proves that we need someone to serve, है ना. This proves that we need, and we also want to be served. That exchange of love, yeah, exchange of service is an intimate nature of this particular soul. ये सबको चाहिए. Everyone practically needs this. Nobody can deny this. ये भी शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा सेशंस में. बट इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंस, सी, हमारा नेचर क्या है? टू सर्व एंड टू बी सर्व्ड, राइट. सो वी ऑलवेज नीड समबडी फॉर दैट एंड सम लिविंग एंटिटी. सी, देयर नाउ इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ लैपटॉप. नाउ आई कैन नॉट सर्व लैपटॉप and this laptop cannot serve me. There cannot be any relation between this laptop and me. Why? Because I am animate but this laptop is inanimate object. तो वो exchange नहीं हो सकता है. But we need someone to exchange. Now when that exchange happens, then we experience happiness in our. ये बहुत part. See, we all want happiness, and when this exchange happens of serving and getting served, then we get happiness. But we see that in this whole world we are not happy. Why we are not happy?
बिकॉज हमें ऐसा आज तक कोई मिला नहीं जिसको हम सर्व करके हैप्पी हो सकें। अभी आप लोग सोचोगे अरे ऐसा कैसे, इन दिस वर्ल्ड सो मेनी पीपल आर देयर, सो मेनी एनिमल्स आर देयर, इतने रिलेटिव्स हैं हमारे, फिर भी हम हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? Students, about this service, there is one more point to be noted. See, we want to serve, बट वो जो पर्सनैलिटी है इस वर्ल्ड में, जितने भी लोगों को हम सर्व करते हैं, एवरीवन टर्न्स आउट टू बी सेल्फिश, इसलिए हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता है ना? किसी को भी देखो, जैसे मान लो आप कंपनी में जॉब किए, बॉस है आपको, ही विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग यू, है ना? आप अगर उसके लिए 8 घंटा काम करेंगे तो आपसे 10 घंटे का काम करा के लेगा, कम सैलरी देगा, ही ट्राइज टू एक्सप्लॉइट यू, यू विल नॉट बी हैप्पी। चलो ठीक है, बॉस का बात हो गया। फ्रेंड्स, समटाइम्स फ्रेंड्स आर आल्सो एक्सप्लॉइटेटिव, वो लोग भी सेल्फिश होते हैं। मोर देन दैट, मेनी अ टाइम्स रिलेटिव्स आर आल्सो एक्सप्लॉइटेटिव, कभी कभी रिलेटिव्स भी इतने सेल्फिश हो जाते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट यू। इसलिए वी कैन नॉट गेट हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। अभी आप लोग बोलेंगे नहीं सर, सी देयर आर सम पीपल हु आर सेल्फलेस। देखो सब लोग सेल्फिश हैं, बट देयर आर एटलीस्ट फ्यू पीपल इन माय लाइफ हु आर सेल्फलेस। आई एग्री, डेफिनेटली आई एग्री। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो कोई एक स्टूडेंट है हमारे ग्रुप से, वो हाथ उठाता है, बोलता है सर आई हैव अ फ्रेंड हु इज टोटली सेल्फलेस, हु इज टोटली सेल्फ, माय रिलेशन विद हिम इज वेरी नाइस, है ना? माय बोथ ऑफ अस फ्रेंडशिप इज टोटली सेल्फलेस। तो ये जो सेल्फलेस है, ये तो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। एक होता है सेल्फिशनेस, दूसरा पॉइंट, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड व्हाट इज द स्पेशल इज, even if it is selfless, it is temporary. So therefore, I would just request all the participants to mute yourself. If you have questions, you can unmute. Otherwise, even if you have questions, we'll take at the end of the class. Right? So let us continue. See, first is, एक तो selfish होते हैं, मान लो selfless भी हो गए, that relationship is temporary because someday he has to die or someday we have to die. So in this particular one, because of these two characteristics, one is selfishness, second is temporary nature, we are never happy. Even if we get happiness, it is also temporary, less happiness. We need to redirect our serving mentality to that personality who is selfless and permanent, eternal. ऐसे पर्सनैलिटी के टुवर्ड्स हमारा सर्विस को डायरेक्ट करना पड़ेगा जो सेल्फलेस है और इटर्नल है, परमानेंट है। हु इज दैट? इज गॉड। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट spirituality, then you will be happy in your life. Now when we talk about, ये भी आप लोगों ने पहले शायद सेशंस में ये सुना होगा अबाउट सर्विस टू गॉड, है ना? एम ऑफ लाइफ इज सर्विस टू गॉड, ये भी डिस्कवर योरसेल्फ सेशंस में शायद सुना रहेगा आप लोगों ने। नाउ कमिंग टू टुडेज सेशन, हमने अभी तक क्या देखा? सर्विंग गॉड इज द ओनली सोल्यूशन बिकॉज ही इज सेल्फलेस एंड परमानेंट, इटर्नल। बट स्टूडेंट्स, ये तो हो गया सर्विंग हिम, राइट? Because he is selfless and permanent. Now we have to analyze what should be our mentality towards serving him. हमारा mentality क्या होना चाहिए? That is the main topic of today's session. हमारा attitude क्या होना चाहिए? हमारा mentality क्या होना चाहिए behind that particular service? है ना? The topic is ascending from fear. पहला स्टेज है फियर, लास्ट स्टेज है लव, और उसके बीच में कुछ स्टेजेस आते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी ग्रेजुअली। व्हाट आर द स्टेजेस? नाउ ये भी हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखो, ये समझ गए आपको भगवान, है ना? वी हैव टू कंसीडर लॉर्ड इन आवर लाइफ बिकॉज ही इज सेल्फलेस एंड परमानेंट। सो इफ यू कंसीडर गॉड in this world, there are many types of living entities. They understand, yes, God is there, I need to go to God to worship him, बट सबका मेंटालिटी अलग अलग रहता है। फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटालिटी इज व्हाट, यू नो, पीपल एट द स्टेज ऑफ फियर।
दिस इज द फर्स्ट लेवल, फियर। फियर मतलब क्या? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बराबर एग्जाम के टाइम पे जाएंगे मंदिर, है ना, हम में से भी कोई होंगे एग्जैक्टली, गणपति बप्पा मोरया, गणपति मंदिर में जाना चाहिए, वी शुड गो टू गणेशा। व्हाई? बिकॉज वी नीड मार्क्स, इफ वी डोंट गेट मार्क्स वी विल फेल। अगर हम भगवान को वर्शिप नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो इसलिए हम मंदिर जाते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे जस्ट गो टू टेम्पल बिकॉज दे फियर, अगर हम मंदिर नहीं गए तो हमें नरक जाना पड़ेगा, वी विल गो टू हेलिश प्लैनेट्स। कुछ लोग सही काम करते, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों झूठ नहीं बोलते? बिकॉज दे फियर, और इफ आई टेल अ लाई आई हैव टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स। इंटरेस्टिंगली, मैं आपको एक और, शायद आप लोगों को पता होगा कि आई डोंट नो, बट देयर आर सम कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, व्हाट दे डू इज दे अप्लाई स्ट्रिक्ट रूल्स, है ना। कुछ अरेबियन, सऊदी अरेबियन कंट्रीज में वहां पे ही आता है ना, कुछ वेस्ट में ना, उस कंट्रीज में कुछ देयर आर सम रूल्स व्हिच आर so strict. You might have heard wearing burqa it is compulsory, ऐसे से कुछ रूल्स होते हैं फॉर वुमेन एंड मैन, दे शुड नॉट मिक्स विद ईच अदर, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। होता क्या है एक्चुअली, दे आर सो स्ट्रिक्ट दैट दे इवन गिव पनिशमेंट एज किलिंग देम, है ना, उन्हें डायरेक्ट डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, दैट्स व्हाई दे नेवर ब्रेक अ रूल। बट व्हाट हैपेंस, यू नो, दे नेवर ब्रेक अ रूल इन देयर कंट्री, but when they plan to go out of the country to break the rule, है ना, देखो उनके कंट्री में वो एंजॉय कर नहीं सकते, तो दे गो आउट ऑफ द कंट्री। तो मेरे को बताओ पर्पस क्या रहा, इज देयर एनी यूज ऑफ दिस? बेसिकली आई वांट टू टेल यू, फियर इज नॉट अ गुड मेंटालिटी, है ना। जो फियर का जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज नॉट सो गुड टू फॉलो। हम डर डर के नहीं नहीं कॉलेज जाना पड़ेगा, सुबह सुबह बुलाया क्यों? अटेंडेंस। सी इफ यू गो टू अ क्लास फॉर अटेंडेंस, है ना, अभी बुलाया गया है सेशन में, AIYS के सेशन में, अटेंडेंस पड़ेगा, दैट इज नॉट अ गुड मेंटालिटी, यू नो। अटेंडेंस पढ़ना, अदरवाइज पनिशमेंट मिले, नो दैट्स नॉट गुड, है ना। नॉट आउट ऑफ फियर, अगर फियर से जा रहे हो, दैट मीन्स इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ना, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। फर्स्ट स्टेज इज फियर, सेकंड स्टेज इज व्हाट? फियर से थोड़ा ऊपर है डिजायर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर? डिजायर मतलब इच्छा है, कुछ तो डिजायर है हमारा। विल टेक एन एग्जांपल। जैसे बहुत सारे घरों में आप लोग देखे होंगे, फ्राइडे का उपवास होता है, थर्सडे का उपवास होता है, मंडे का उपवास होता है। मेनी पीपल डू ऑल दिस व्रतास, फास्टिंग करते हैं वो लोग, क्यों? बिकॉज दे नीड समथिंग, है ना। पीपल पीपल टेक फास्ट furnish, why? Because they want marks. People take fasting for हनुमान जी। हनुमान जी का एक और नाम है मारुति, आप लोगों ने सुना होगा। तो हम मारुति के पास जाते हैं मारुति कार मांगने के लिए, दिस इज नॉट सेंसिबल। हम अलग दुर्गा देवी के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, शिव जी के पास जाते हैं कुछ मांगने, सो मेनी वेराइटीज ऑफ लॉर्ड वी हैव, वी गो टू देम एंड वी आस्क फॉर समथिंग, डिजायर, कुछ ना कुछ डिजायर रहता है हमारा। इज दिस गुड? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। Why this is not good? Because if you have desire and if it is not fulfilled by due to some circumstance, then it will not continue, ज्यादा टिकेगा नहीं। इसलिए डिजायर वाला जो भी स्टेज है वो भी थोड़ा कम ही है, बट सेकंड स्टेज इज डिजायर, इट इज बेटर देन फियर एटलीस्ट। थर्ड इज ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स, जैसे जैसे मान लो यू आर स्टेइंग इन इंडिया, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? Now it's your duty to follow the rules of India. See, you may not have any love for India, maybe you may have, you may not have, but duty के तरीके से, अरे यार आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया ना, आई एम सपोज टू डू, सपोज्ड वाला जो वर्ड है ना वो आ जाता है, सपोज टू डू, करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल, you go to a western country, you cannot spit, you cannot throw garbage here and there,
But when you come to India, you throw anywhere. Why? Because there is no rule. But अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी के वजह से रूल आ गया. You cannot spit anywhere. You will be fined by 500 rupees. But earlier it used to happen. See, the same person goes to Western country, he doesn't spit. He doesn't throw garbage here and there. But he does. Why? Because in Western country it is his duty. Rule है. Follow करना पड़ेगा. Supposed to do. है ना? तो जब ड्यूटी की बात आती है, ये भी ज्यादा है ना. फियर, डिजायर, ड्यूटी, ये तीनों कोई ना कोई कंडीशन में हम उसको फॉलो नहीं करते. बट स्टूडेंट्स, फोर्थ एंड लास्ट लेवल इज व्हाट? लास्ट लेवल इज लव. लव मीन्स व्हाट? यू लव इंडिया. जैसे कंट्री की बात आती है, नेशन का बात आता है, यू लव इंडिया. दैट मीन्स even if you think of spitting somewhere, you'll not spit. You'll think twice कि अरे यार मेरा. जैसे एक एग्जांपल, अभी आपका घर है मान लो. See, you love your home, isn't it? That's why you will not throw garbage here and there, spit here and there. No, आप रोड में थूक देंगे लेकिन घर पे नहीं. Similarly, when we are at the stage of love, then we can really establish that strong relationship. Otherwise, at the stage of fear, desire, duty, it is temporary. ज़्यादा टिकेगा नहीं. But love में, that is eternal. That becomes eternal. I'll give you an example. मान लो you are a son, you have a father. मान लो एक फादर और सन का रिलेशनशिप है. अभी बेटा हमेशा फादर से डरता रहता है. अच्छा रहेगा क्या? नहीं, it will not be good. See, if a son always is scared of father, is fearing father, कि अरे मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मारेंगे पापा, है ना, अगर मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा तो he will punish me. If every time, every now and then he is fearing, then how can he benefit? है ना. तो he will always think अरे कब मेरे पापा घर से जाएं और मैं इंटरनेट चालू करूं, है ना. See, this is at the stage of fear. Second is desire. Desire is some things. If I score first rank, I'll get a bike. If I score 9 CGPA, I will get a nice smartphone. Is this good? No. Why this is not good? Because if father doesn't give smartphone or bike, he will break the relationship. He'll start fighting. That's why this is not good. So fear हो गया, desire हो गया, duty. Sometimes student thinks अरे मेरे पापा फीस भरते हैं, है ना. My father is paying money for me in college. I have to go to college. I have to attend, है ना, properly. Fees, है ना, supposed to do duty वाले stage में. But वो भी ज़्यादा टिकेगा नहीं, है ना. But at least duty is better than fear and desire, है ना. Duty is better than that at least. कि at least आप जब college जाते हैं तो you have to remember कि my father is paying money, I have to go. At least that is better than desire and fear. But last is love. If you have love for your parents, you will never do anything wrong in your life, even when you stay in hostel, है ना. That is importance of love. अगर हमारा लव नहीं है तो हम मूवी देखने जाते हैं और माँ फोन करेगी तो हम माँ को क्या बोलते हैं? आई एम स्टडिंग, आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट. इज दैट लव? नो, दैट इज नॉट लव, है ना. अगर लव है, दैट मीन्स even if your mother and father is not there with you, you will study. You remember, yes, what my parents want. That is at the stage of love. I'll give you one more example, students. जैसे मान लो आप किसी होटल में जाते हैं तो you find a waiter, right? Now when you find a waiter, देखो वेटर कितना प्यार से बात करता है ना. इंटरेस्टिंग है ना. वेटर इतना प्यार से, सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, ये वो ये इतने सारे आइटम का लिस्ट बताता है वो, है ना. बहुत बहुत, और कभी कभी डिस्काउंट लाता है. एंड वॉट एवर यू ऑर्डर, इमीडिएटली ही ब्रिंग्स. सब कुछ अच्छे से सजा के लेके आता है. व्हाट डू यू थिंक? ही लव्स यू? दैट वेटर, he loves you? Do you think that? No. In the same instance, we will take one more example. Suppose you go to your home, हाँ? आप घर जाते हैं और मदर खाना बनाती है. Now when your mother cooks and gives you simple, मान लो राइस, दाल, सब्जी, चपाती, सिंपल कुछ तो बना के देंगे. But
You know that yes, this is love. But वो जो रेस्टोरेंट में वेटर था, see, he might be talking more in a more lovable way than your mother also. But you know in your heart, no, this is not love. This is with desire. है ना, टिप चाहिए, है ना, पैसा भरेगा. That, see, there this example. I gave you this example to understand that students, we all need relationship, not at the stage of fear, desire, लव. हमें वेटर का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें मदर का रिलेशनशिप चाहिए, isn't it? एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो नरेंद्र मोदी. सी, नरेंद्र मोदी when he is around, there is a कांस्टेबल है उसके घर में, मान लो, या पार्लियामेंट में कांस्टेबल सिक्योरिटी टीम में रहेगा. कांस्टेबल हैज सम रिलेशनशिप, यस, बट द कांस्टेबल इज एट द स्टेज ऑफ फियर. हमेशा डरता है, उसको कुछ नहीं मालूम नरेंद्र मोदी के बारे में. ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. बट if you go higher to a cabinet minister, देखो पहला क्या हो गया, कांस्टेबल. दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर. now cabinet minister is little better than constable. Why? Because cabinet minister knows little more about the prime minister. Cabinet minister thinks, अरे I know what will be his opinion, क्या सोच रहे होंगे, अच्छा ऐसा डिसीजन मेकिंग करना है, इनका ये ऑर्डर आया, फॉलो करना है. He knows little more than the constable at the level of desire or duty, something like that. But when that same prime minister goes to home, suppose Narendra Modi goes to his home, see, his mother can slap him, isn't it? And when his mother slaps him, Narendra Modi will be very happy. Why he will be very happy? अरे सर, आप क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को स्लैप किया किसी ने, तो why नरेंद्र मोदी will be happy? उनके पास ब्लैक कैट कमांडोज हैं, they will directly शूट करेंगे. नहीं, see, the constable has no relation, he is at the here. अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ बोला तो शूट कर दिया जाएगा, कुछ बोला तो भी शूट किया जाएगा. बट कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ा बेटर है. इवन इफ कैबिनेट मिनिस्टर डज समथिंग, ही विल बी पनिश्ड, जेल में डाला जाएगा. बट व्हेन ही गोज टू होम, इवन इफ हिज मदर अब्यूजेस हिम, है ना, और थप्पड़ मारती हैं, डांटती हैं, still nobody in this world has anything to do with that. कुछ नहीं. इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग. कमांडोज छोड़ो, नेशन छोड़ो, गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड द पीएम, प्राइम मिनिस्टर. एंड हाउ दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप केम? एट द लेवल ऑफ लव. और ये लव वाला जो रिलेशन आता है, हमें वो चीज डेवलप करना है. सी, लॉर्ड इज सेल्फलेस, ही इज परमानेंट, बट हमारे हार्ट में हमें वो सेल्फलेसनेस, हमारा मेंटालिटी सेल्फलेस बनाना है. देन वी कैन रिमेंबर लॉर्ड मोर, राइट? दिस सेल्फलेसनेस इज व्हाट वी रियली वांट इन आवर लाइफ. एंड इफ वी गिव दैट सेम सेल्फलेसनेस टू अदर्स, देन वी विल एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. जैसे, see, recently Dasera festival was celebrated, and I was just going through some of the Ramayana pastimes. तो रामायण में एक लीला आता है, you all might have heard. भरत के बारे में सुना है आप लोगों ने? You all can reply writing yes. भरत के बारे में, भरत मिलाप. हाँ, yes, correct. तो भरत जी के बारे में देखो, राम और भरत जी के बारे में हमने सुना है. Now see what happened exactly. Obviously बहुत सारे लोगों को स्टोरी भी पता होगा. We will not go into details because we don't have that much time to discuss the whole Ramayana. But we all know that Ram went to and Bharat's mother wanted Bharat to be the king. ना, ये झगड़ा ब्रदर्स के बीच में झगड़ा नहीं था. The mother wanted that Bharat should be the king, and Ram went to forest. Now what happened actually? When Bharat came back, he came to know, my brother, he went to forest. How can that happen? He took the whole army, everybody practically from the kingdom, he took them to the forest to convince Ram to come back.
अभी जब फॉरेस्ट में पहुंच गए, सी भरत एंड राम वर सिटिंग facing each other, and you know what they were doing? They were trying to convince each other that you take the kingdom. ऐसा कभी होगा क्या? देखो, एक्चुअली इट हैपेंड आल्सो वंस. एक एक घर में बहुत बड़े करोड़पति थे, बिग बिजनेसमैन, है ना. सो इन हिज हाउस देयर वाज अ बिग फाइट गोइंग ऑन कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी है. देयर वर ओनली टू सन्स, सो बोथ वर फाइटिंग टूथ एंड नेल कि कौन लेगा ये प्रॉपर्टी, कौन लेगा वो प्रॉपर्टी. बट व्हेन दे हर्ड अबाउट दिस पास्ट टाइम, द होल मेंटालिटी गॉट चेंज्ड. दे आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग, अरे वी वर सो सेल्फिश. नहीं, ये अच्छा प्रॉपर्टी ये आप लो, ये बुरा ये मैं लेता हूं. और दूसरा भी भाई बोलने लगा, नहीं ये अच्छा है ये आप लो. सी द फाइट इज सेम ना. There is no difference between fight, but the mentality has changed. Now, this fight is based on love, not due to selfishness. That same thing happened with Bharat and Ram also. See, Ram wanted Bharat to be the king, and Bharat wanted Ram to be the king. This fight was going on based on love. Ultimately, Bharat had to come back. But when Bharat came back, what happened? Bharat को अच्छा लगा क्या? अरे वाह, मेरे मन के अंदर तो था कि मैं ही राजा बनूं, लेकिन क्या जाना पड़ेगा, आउट ऑफ ड्यूटी आई हैड टू गो. नहीं, when Bharat came back, he never ruled. He stayed outside the kingdom, but he he perfectly did all his responsibilities. He performed all his responsibilities properly. Why? Because he loved Ram. ना, राम जी को वो प्रेम करते थे, प्यार करते थे. वो जो दो भाई के बीच में जो लव है, सेल्फलेसनेस है, that increases happiness in our life, right? All these lessons from scriptures which we take is always beneficial for us. Why? Because we learn that those practical lessons in our life. और ये selflessness जब हमारे लाइफ में आएगा, then really we can taste that nectar of love. Otherwise we are always roaming around thinking कि व्हाट्सएप में किसी के साथ चैटिंग कर लिया तो लव हो गया. नहीं, उसको नहीं बोलते, उसको लस्ट बोलते हैं. व्हाई लस्ट? इन दिस वर्ल्ड एवरीबॉडी इज सेल्फिश. तो जब सेल्फिश हो जाता है, देन वी टर्म इट एज लस्ट. बट जब सेल्फलेस होता है, देन इट इज रियल लव. वी थिंक अबाउट अदर्स हैप्पीनेस, हाउ वी कैन डू बेटर फॉर अदर्स, हाउ वी कैन डू गुड टू अदर्स, है ना. एक इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे. एक बार क्या हुआ, I met a person. So he was a big businessman. Presently I'm in Pune. So he used to do up and down from Pune to Mumbai. And if you might be knowing this or not, I don't know. But Pune to Mumbai is a 3 hour three hour traveling in car, 3 to 4 hours. It's around 160 to 180 kilometers. So regularly up down करते थे. One day what happened? It was a night time, night 9 to 10 o'clock. He was traveling. And while going to he was coming to Pune. While coming to Pune, his car got punctured. अभी कार पंचर हो गया कहाँ पे? बीच हाईवे पे. There was no garage anywhere nearby. और पंचर हो चुका है. If he comes to Pune, how can he come to Pune now? There is no way he can get any lift also at that time during night 10 o'clock. So he was waiting. He was trying to find out the solution. What happened is, one person came, a village person. There was a nearby village. He came to him and he told him, "Sir, do you need some help? Should I help you?" तो उन्होंने बोला, "Yes, I need help." बोला, "क्या?" "Actually मेरा कार पंचर हो चुका है and I cannot travel now. So I needed a garage, so ताकि ये रिपेयर हो सके, और मेरे को रात को रहने के लिए एक जगह चाहिए. I cannot see anywhere nearby hotel also." That village person, what he did, he took this person to his own home. It was very small house, हाँ, पूरा झोपड़ी जैसा एक था. आप लोगों ने झोपड़ी देखा होगा, छोटा सा घर था विलेज में. So he took that businessman to his own home और उन्हें बोला, आप इधर रहिए, you stay full night, you sleep here, you take rest, don't worry, there is a nearby garage. In the morning it will get opened and your car will be fine and you can go back. So
He was happy. Yes, fine, thank you. So he took rest during night. फिर सुबह उठे, कार ठीक हो गया, and that village person he gave him nice food also. Nice food मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पाँच दस टाइप के आइटम, नो. विलेज, अब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चपाती राइस ऐसा छोटा कुछ बेसिक आइटम होंगे. So he gave him that. And when that person ate and he was about to go, that person removed around 5,000 rupees to give that person, that village person, कि भैया आप ये 5,000 रुपया रखिए. तो ये विलेज, जो ये that village person, he thought, why you are giving me money now? So this businessman told, अरे you gave me shelter baba during night, so I am grateful, I want to reciprocate, I want to give you something. You know what that village person told? He told, अरे this was my responsibility towards you, I don't want anything, I just did it because you are in problem and I helped you. जैसे ये सुना उस बिजनेसमैन ने, you know what happened? He became so emotional. He told, अरे you don't want anything. देखो उसका घर कैसा है, झोपड़ी है, उसको खाने के लिए शायद 2 टाइम का खाना नहीं रहेगा, but he fed him 1,000 rupees. Why? Because his service was selfless था इसलिए. This businessman, what he did, you know, he removed his personal contact number. He gave that village person. He told him, देखो भैया मैं मुंबई में रहता हूँ, आप जब भी मुंबई में आएंगे, कभी भी इस कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए. यू कैन स्टे फॉर वॉट एवर टाइम यू वांट इन माय बंगलो, इन माय पर्सनल बंगलो यू कैन स्टे. यू कैन. अभी आप सोचो, अगर इसने वो 5,000 रुपया ले लिया होता, इफ यू वुड हैव टेकन दैट 5,000 रुपीज, है ना, वो बिजनेसमैन ने कार्ड निकाल के दिया होता क्या? नहीं. See, that businessman removed the card and gave him. Why? Because the service was selfless. उसने selfless किया, इसलिए he is also doing selfless service now. If you do something selfless to others, then you will get something selfless from others. If you are selfish towards others, then you cannot expect. So this is the taste of selfless love. Very important to understand in our lives, है ना. इसको समझना बहुत 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 important है. Because we all want happiness, जैसे मैंने शुरुआत में बताया. And at the stage of fear, desire, duty, हमेशा पेन मिलता है, but वो happiness नहीं मिलता है ना. Similarly, when we love God, उस businessman के तरह ही, when we love God, है ना, if we love in a selfish motive, तो भगवान, God will also reciprocate accordingly. But if you are selfless to God, then God will also remove his card and give to you. You can come anytime to spiritual world and stay for whatever time you want, isn't it? Right? देखो, जब भगवान आप कार्ड दे देंगे, then you will be allowed there. But that needs selfless love. That cannot happen with selfish love. It happened also. It happened. You might know this, that in Krishna Leela, in Krishna pastime, there was a character known as Sudama, a person known as Sudama. He was devotee of Lord. He was so poor, इतने गरीब थे. He used to stay in झोपड़ी. He was practically a beggar only, in rags. कुछ नहीं था उनके पास. But still, he never went to Krishna. He was a good friend of Krishna. And we all know Krishna is Namo Brahmana Devaya. Means he is master of Brahmanas. He gives everything to Brahmanas. But Sudama never wanted anything. Sudama never went. But finally his wife told, please go. You know, he's your friend. You can ask him something. On insistence of his wife, he went to Krishna. Into Krishna, still he didn't demand anything from Krishna. कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने. अभी कुछ भी नहीं पूछा. But Krishna knows everything because he is God, right? He knows everything. He was waiting when Sudama will ask, but Sudama didn't ask. And just Sudama came back. But
Sudama was not asking anything, but still Krishna gave everything to him. This is the nature of selfless love. Sudama, he didn't want anything, but Krishna gave his card. Similarly to that businessman's example I am telling you, Krishna gave him card. Krishna ordered Vishwakarma, hey, you go and immediately do everything, do the needful, and give him all riches, everything to enjoy in his life. And Sudama got everything. This is the relationship of friendship which Krishna does with his devotees. But the relationship should be selfless. In this world also many a times this happens, right? जैसे देखो, one more thing I want to tell based on this particular thing, कि जब ये selfless वाला बात आता है ना, or selfless love towards Lord, how can we develop this? We can very easily develop when we stay with like-minded friends, selfless friends, है ना. हमारे जो selfless friends के साथ अगर हम रहेंगे, those who love God, those who worship God selflessly, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो वो selfless love हम develop कर सकते हैं. We can develop that selfless love very easily. We can understand that particular concept easily. So it depends on us that what association, what friends we select in our life. बहुत important है. Get friends who are not selfless, who are selfish, है ना. But there are many friends who are really selfless. See, they go to temple, they are very nice in studies, they attend classes regularly, they are very truthful to their parents. ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स, शायद आपके फ्रेंड्स होंगे या नहीं पता नहीं, बट कुछ तो स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ आप फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं. If you develop that particular friendship, then you can develop this towards Lord and other people in the society. Otherwise it becomes very 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 difficult when you stay with selfish friends. अभी मैं आपको selfless friends के साथ रहने क्यों बोल रहा हूँ? Why? Because see, those students, अभी देखो selfless friends का एक और मतलब क्या होता है? Who are devotees of Lord. Now you might ask me, sir, do you think only devotees of Lord can be selfless? Only devotees of Lord can serve selflessly? Yes. Why? Why? This is a very important point to note, because when you know that you are not this body, you are soul. When you know that yes, there is some God, Krishna, who is present in this world, then only you will be serving others. Otherwise, you will always exploit others. I'll give you an example. जैसे देखो, इस दुनिया में कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग आपको बहुत अच्छा से अच्छा आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन होगा फ्रेंडशिप का. But when they go home, when they go to a restaurant, they will not have friendship with chicken, mutton, है ना? क्यों? See, they may have friendship with one person, one living entity, but they don't have friendship with other living entities. They may kill a goat, they may kill, they may eat beef. Some people, है ना, they eat cow flesh also, है ना? Slaughterhouses people maintain. अभी देखो, some people they are so cruel. मैंने कभी-कभी देखा है, there are some students who are who are like unnecessarily they will trouble dogs and cats in their society. Why this is happening? Because see, they may be very friendly to you, but they are not considering them as friends. Why? Because they don't know that there also in animals body also there is a soul. वो लोग को वो पता नहीं है. One more example I'll give you. See, if you are really understanding that yes, I am a devotee of Lord, there is Lord, I am not this body and soul, you will not hate anyone in this world. Not even you will hate Pakistani, or you will hate people from other countries. You will love every living entity in this world. Animals, birds, people in this world, human beings, everyone. And this is known as Vasudhaiva Kutumbakam. है ना? वसुधैव कुटुंबकम जो संस्कृत का एक वर्ड आता है वेदास में, उसका मतलब क्या है? Basically it means what United Nations want to do. United Nations means we all want to be united, but it doesn't happen. Why?
because they don't know we are not this body, we are soul. If they start understanding we are not this body, we are soul, if they start developing selfless love to God, they start following instructions of God based on that love, then they can love everyone. They will not hate anyone, they will not exploit anyone, है ना? तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई अ सेल्फलेस लव कैन बी ओनली डन टू लॉर्ड and to devotees of the Lord. And to those devotees who understand what Lord speaks in Vedas or scriptures like Bhagavad Gita. कभी कभी you know if you talk about selfish friends, ऐसा भी होता है कुछ friends होते हैं, they will tell you, they are so selfish, they will come and tell you, अरे what you are doing, you are practicing spirituality in young age, क्या फायदा है बताओ, अभी नहीं बुढ़ापे में करना चाहिए, है ना? Many of your friends may also say, actually I will term them as selfish. Why? Because see, nobody knows in this world who is young and who is old, right? You cannot tell that no, I am young, he is old. No. See, old age कौन कब मरेगा पता नहीं है. When we will die, we don't know. Recently we have seen, now the lockdown has like starting opening at different places, but recently we have seen this corona affected practically crores of people in this world. इतने सारे लोग मर गए. Now see, we never expected this to happen. Death may come at any time. Even young people have died in at many places. I have practically seen in this place of Pune and Mumbai. You all might be knowing this. Pune and Mumbai was most affected. So see, people when they will die, at what age they will die, we don't know. So spirituality is important. That's why Vedas they say spirituality should be practiced from the age of 5. है ना? Now खाली spirituality करना चाहिए नहीं. Spirituality should be developed to increase your character, to develop character in your life. तो जो दोस्त, some of your friends, they are selfish, they tell you अभी क्यों कर रहे हो? See, they don't want to do, and they want to, है ना, affect you, they want to exploit you. That's why they are suggesting you not to do also. So they are wrong. Another thing they may tell you, अरे क्या भगवत गीता सुनता है ना? क्या मेडिटेशन करता है? क्या साधु बनना है क्या तुझे? तू साधु बन जाएगा, है ना? So I always ask, है ना, मेरे फ्रेंड्स जब मुझे बताते थे, आई यूज्ड टू टेल देम, यार सेंसिबल अगर कोई भी है तो वो सोचेगा. सी, भगवत गीता वाज स्पोकन टू होम? भगवत गीता वाज स्पोकन टू अर्जुन. हु वाज स्पीकिंग? कृष्णा वाज स्पीकिंग. डिड अर्जुना बिकम साधु? नो. अरे अर्जुना fought such a, he fought a war after that. Similarly, when we hear Bhagavad Gita or we hear such sessions, इससे क्या होगा? साधु बन जाएंगे? नहीं. Obviously, साधु मतलब in a good way. You will do your responsibility in a more nice way, in a more perfect way. How you will do your responsibilities? You will do your responsibility, carry your duties, and developing selfless love towards Krishna, which is at the 4th level. अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, वेदास पढ़ते हैं, scriptures पढ़ते हैं, you start spiritual life. If you include spiritual friends in your life, then you can develop that attitude of responsibility towards your duties. Why? Because those duties are also ordered by Krishna only. See, Krishna wants you to study nicely. Why? Because Krishna wants that you should love him, you should love his living entities, you should love everyone, you should serve everyone. तो इसलिए our responsibility of studying is also a duty or a work as a selfless love towards Krishna, है ना? हम जब पढ़ाई करते हैं, we don't go to Krishna and tell, ओ कृष्णा मैं तो चैंटिंग किया नहीं गए एक हफ्ते में, आज तो एग्जाम आ गया, आज मैं दो राउंड चैंटिंग करता हूँ, हाँ, ताकि क्यों मार्क्स मिल जाए. नो, we don't chant for that. We chant because we love Krishna. We want to develop that love for Krishna. And we have full faith on Krishna that yes, Krishna also loves us because he's our love. So there is, when this relationship gets established, and when we go from fear to desire, then duty, then love, then we will become happy in our life. But obviously it's not a instant process. ऐसा नहीं कि आप तुरंत fear से कूद जाएंगे love पे.
there is a gradual development. So we all, somebody might be at the stage of fear, somebody at the stage of desire, some of our activities may be at the stage of duty, but we should make an effort to do each and every activity, try to do that activity at the stage of love, selfless love towards Lord. Then that exchange of relationship will be very strong. Then we will really become happy. Then we can really develop that love towards Krishna, happiness in our lives. तो वो जो हैप्पीनेस है, दैट विल बी स्पेशल. जो हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि हमें हैप्पी चाहिए, राइट? हमें हैप्पीनेस चाहिए बट नहीं मिल रहा है. Sometimes people go to temple also, but still they are not happy. Why they are not happy? Because they are at the stage of fear, desire, and duty. They are at the stage of fear, desire, and duty. That's why they are not happy. कभी कभी हमें लगेगा, सर बाकी रिलीजन में ऐसा क्यों होता है? सी अदर रिलीजन्स, ऑल अदर डिफरेंट रिलीजन जैसे हम देखेंगे, सी जैसे आप लोगों को भी पता होगा, वी आर नॉट प्रोपगेटिंग हिंदुइज्म हियर, वी आर प्रोपगेटिंग सनातन धर्म. But Sanatan Dharma is like over some and substance of Hinduism only. But when we talk about Muslims and Christians, so all different kinds of religion, they may preach different things at the stage of fear, desire, duty. That's why see they are not redundant. ऐसा नहीं कि उनको criticize करना चाहिए, they are bad. No, not like that. Everybody is preaching. Even in Hinduism also there are many rules which tell you at the stage of fear, desire, duty. है ना? हमें बताया जाता है कि अगर आप शिव जी का पूजा करेंगे तो आपको अच्छी वाइफ मिलेगी, है कि नहीं? और अगर आप दुर्गा देवी का पूजा करेंगे तो आपको अच्छे हस्बैंड मिलेंगे. Now what is that? This is at the stage of desire only. These are told by Vedas. So every scripture tells you some things which are at the stage of fear, desire, duty. But we have to accept those things which are at the stage of love. Then we can establish the strong relationship. Right? Thank you. And I would like to appreciate all of you. है ना? जैसे मैं फ्रेंड्स के बारे में बता रहा था, सी मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यू शुड डेवलप दैट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप with those students who are devotees of Lord, and then only you can increase your selfless love towards God. You can develop your friendship with them. What happens is you will go ahead in spirituality and in your studies also, right? And I'm very happy that all of you are regularly coming to these sessions, and I'm very happy to know that the organizers of this program, they told me that you people are regularly coming for these sessions. So please keep coming. The coordinators from your college, whoever is calling you, right, see how selfless they are. They may not get anything. See, if you go to your college, your hostel friends may rag you, but these friends who are calling you from your college, they are calling you with a very selfless motive कि यार आओ session attend करो, chant, meditate, just to benefit you, right? They are not getting anything, but they want to benefit you. So this shows some extent of selflessness of a devotee and Lord. So please continue this particular relationship. Please come in for these sessions regularly whenever you are called, and obviously you have to focus on your studies also nicely. Thank you for this. And any questions, you can ask me on chat box, or you can mute yourself and ask also. Thank you very much, sir, Okay. for this wonderful session. If anybody want to ask any question, then sir is available here. After that, there are some announcements, so please wait. Don't leave the meeting. Any questions? अच्छा, सबको समझ में आ गया लगता है. I think there are no questions maybe. Okay, fine.
So, Shubha Krishna, who is the host of this meeting? Yes, thank you, sir. Okay, fine. Just a minute. There are a couple of announcements. Okay, fine. Before that, I think Shubh, are you there? Or I think he's busy. So first of all, sir, we would like to thank you for your taking out valuable time and giving such a valuable wisdom to our students. So let us thank sir. And because of his, in spite of his tight schedule, he is helping us to learn this knowledge. We heartily thank you, sir. And apart from that, there are a couple of announcements. So till that time, you can solve the test also and listen to the announcements. So on Monday, Tuesday, and Wednesday, there will be the presentations on the topics which are given. Hello. Yes, Shubh. Hello, am I audible? Yeah. Please continue Okay. with the announcements. You can announce the announcements. Okay. Announcement regarding this. 1 second. Yes. From Monday, Tuesday, and Wednesday, there will be presentations on the topic given to you by Milind sir about that internship. And we'll meet again on Sunday at the same time, 11 to 12. I will request you to please maintain your attendance in all sessions. It will be the criteria for certificate. And on this Saturday, there will be enlivening at 7:30. As you know, you all have attended also. Now there is a quiz I have posted, so please and please rename yourself in the forms as your name, college name, and mark your please mark your got time. Thank you very much, student. You can start posted. Shubh, your voice is breaking a little bit. So I'm done with my side. Your voice was breaking, Shubh. Hello. Your voice was a little breaking. Can you repeat once again? So I was not audible. It was breaking. Your voice was breaking. Nothing was audible. Can you repeat again? Hello. Am I now am I audible? Your voice is breaking, Shubh. Okay, 1 second just. Hello. Yeah, now you can speak. Okay. Sorry. I'm really sorry for the inconvenience. Now from Monday, Tuesday, Wednesday, if there is any discrepancy, please let me know. Now on Monday, Tuesday, Wednesday, there will be presentations on the topic given to you by Milind sir, and we'll meet again on Sunday at this same time, 11 to 12. I would request you to please maintain your attendance in all the sessions. It will be a criteria for the certificates, and all of you know that on every Saturday we'll have a Kirtan at 7:30. You have also attended it many times. Now I have posted the quiz link in the chat box. Please solve that quiz before leaving. And from the further sessions, please rename yourself as your name plus college name and log in your login time. And when you will leave now, I would request you to put your logout time. Test link is there. Yes. So please give the test. Thank you very much, all of you. We'll meet at next Sunday. Again. Is there any doubt in this announcement? You can ask now, or I'm done with my side.
Thank you very much. I will thank Manoj sir for his time, for giving us the precious time and the enlivening. Thank you very much, sir, for giving an association on this wonderful topic. And I would like to thank all the participants who have attended this session. Thank you very much.